अभी अभी आपने मिला हमारे CSO से, चीफ स्ट्रेस ऑफिसर। एंड जैसे आपने देखा हमारे चीफ स्ट्रेस ऑफिसर थोड़े से स्ट्रेस में तो थे, वेयर ही वॉज लुकिंग फॉर कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, और क्या बेस्ट ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ हमारे चीफ स्ट्रेस ऑफिसर के लिए है या मेरे लिए है, ये एक एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो है ये बताने के लिए कि मैं किन फंड्स में या कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक हेल्प जरूर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक तो मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है स्टॉक पोर्टफोलियो। मेरा मेजरली पैसा स्टॉक पोर्टफोलियो में है, जो कि प्रोविट कंसल्टेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है उनकी बकेट्स चूज करने में। स्टाफ फोलियो में जनरली मैं स्मॉल कैप वाली बकेट चूज कर, पर अगर मैं फंड्स की बात करूं, कौन से वो टॉप फंड्स है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है या फिर मैं इन्वेस्ट करता हूं। पहले कैटेगरी की बात करते हैं, स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड is probably a very nicely managed fund managed by CP, who was working with a different PMS earlier on, but from the time he's joined Tata, I think that was back in 2017, he's done a fantastic job with Tata Small Cap Fund. The portfolios are nice, so I like the stocks that he picks. I like the changes that he does as per the market conditions, and it has given a very good return in the last, let's say, 5-6 years. So that was the first fund. Which is the second fund that I like? ICICI India Opportunities. Yes, this is also another fund which is part of my portfolio, or which is part of my family portfolio. I like this fund because this is a kind of a special situations fund. They invest in stocks, they invest in sectors which have not performed in the last few years, and which has a potential to perform basis their technical analysis, basis their financial analysis. The sector is due for performance, but due to some reason it's not performing, right? This particular fund is catching the very nicely, and they are delivering a very good return, and they have delivered a very good return. Another good small cap fund is Quant Small Cap Fund. So I like Quant Small Cap Fund. Regardless of the stress test, the liquidity, 50% of its portfolio will be sold off in I think 25-30 days. I like the stock picking strategy. I like the returns. I like the beta of the fund. It's probably not that high as compared to some of the other funds, and the alpha that they are delivering is simply superb. अगर आप एक conservative fund ढूंढ रहे हैं जो कि पूरा 100% equity में नहीं इन्वेस्ट करता, और ये फंड मेरे पास नहीं है बिकॉज मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। आप मल्टी एसेट में टाटा मल्टी एसेट, ICICI में ICICI मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज में टाटा बैलेंस एडवांटेज, या इवन एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज को देख सकते हैं। ये बहुत ही कंजर्वेटिव फंड है साहब। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अनलाइक अदर बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो सिर्फ प्रोबेबली वैल्यूएशन देखते हैं मार्केट में टू एडजस्ट देयर इक्विटी लेवल्स, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड ना सिर्फ वैल्यूएशन देखता है, बट इट ऑल्सो लुक्स एट the momentum in the market. It also looks at the moving averages of the market and then decides its equity allocation. कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है इसमें। एक टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि एक वैल्यूएशन ड्रिवन फंड है, और एक एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि वैल्यूएशन प्लस मोमेंटम ड्रिवन फंड है, ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये कुछ फंड्स थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, जो एक म्यूचुअल फंड्स हैं। प्रोविट कंसल्टेंट्स की बकेट्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उनका जो एक हाई ग्रोथ डायनामिक पोर्टफोलियो है मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मंथली रिजेक्ट करते हैं उसमें और अच्छे स्टॉक्स पिकअप करते हैं। So if you want to look at that, you can have a look at Provit Consultants' high growth dynamic portfolio as well. Again, this is not a recommendation, guys. Please do your research thoroughly before picking up any stocks or any mutual funds. This is just the funds and stocks that I like and I'd like to invest in. और हाँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, मैं आपको हेल्प करूँगा आपके फाइनेंशियल एनालिसिस में। I will do that in this video. So कमेंट्स में आप लिखिए कोई भी स्टॉक, कोई भी म्यूचुअल फंड जिसके बारे में आपको और बेहतर जानना है। कुछ भी डेटा आपको चाहिए, मान लीजिए आपको स्टॉक चाहिए, उसके आपको बीटा चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, रोलिंग रिटर्न्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड जरूर करने की कोशिश करेंगे।
स्टॉक्स के केस में हम आपको एक पूरी PDF बना के आपको दे देंगे to check, to do your research properly. Again, not a recommendation, just to help you with your analysis. Please take your own calls, guys, of whichever stock and mutual funds you want to pick up. Thank you so much for joining. Thank you so much for watching this video. Signing off. Adios.